Hello and assalamu alaikum guys. Today we're going to be doing O-Level Physics 5054 May June 2023 Paper 1 Variant 2. Before starting, मैं आपको बताऊंगा about some important information about your exam. Secondly, मैं आपको बताऊंगा about our topical past papers which is a very convenient way to learn. And thirdly, मैं आपको बताऊंगा about this exam's threshold. Starting off with the exam. आपके एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे. Each question is 1 mark. The total marks are 40 of course. You have to attempt all of the question. खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप एक ये चीज कर सकते हो कि आप तुक्का मारो, which is known as a fluke, या आप एक कैलकुलेटेड गेस करो, कैलकुलेटेड गेस. ठीक है ना? छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना. You will be given 1 hour to attempt this paper. मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप 55 मिनट्स तक अपना पूरा पेपर खत्म कर ले and look for any silly mistakes at the end. You will have 1 minute and 30 seconds on average for each question. ठीक है ना? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम दे सकते हो which is more time consuming. So yeah, moving on to the topical past papers. For every topic there will be a specific QR code. अगर आप हमारी किताब खरीदते हैं तो हर टॉपिक के शुरू में देयर विल बी अ क्यूआर कोड जिसको आप स्कैन करोगे. इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियर एटम है. इसके 70 क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली. तो अगर आप उसके क्यूआर कोड को स्कैन करोगे इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में 70 के 70 क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ठीक है ना? इट इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी वे टू लर्न. अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द थ्रेशोल्ड. कंपोनेंट है 1 2. द मार्क्स आर 40. ए बन रहा है 29 पे, बी बन रहा है 23 पे, सी बन रहा है 17 पे, डी बन रहा है 15 पे, ई बन रहा है 12 पे. 12 तो बंदा तुक्का मार के भी ले सकता है ना. सो एम फॉर दिस, एम फॉर एट लीस्ट 30 to 35. ठीक है ना? एम फॉर दैट एंड यू विल श्योरली गेट अ ए स्टार. ठीक है ना? That is it for the intro. Let's move on to the paper. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. In an experiment, a ball is rolled down a curved track that is about half a meter long. Which measuring device is used to measure the length accurately? So basically हमें एक ऐसी measuring device चाहिए that could measure a curved surface, या आप कह सकते हो कि हमें एक ऐसी measuring device चाहिए that could bend. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. A. A meter rule. A meter rule is a rigid object. जैसे आपने देखा होगा आपकी क्लास में एक ना एक तो मीटर रूल पढ़ा ही होगा. And it is oftentimes made out of wood or plastic. हम इन दोनों चीजों को बेंड नहीं कर सकते in most of the cases. B. A micrometer. माइक्रोमीटर को तो आप आउट ऑफ द कन्वर्सेशन ही रखें क्योंकि हमने 0.5 मीटर्स को मेजर करना है और माइक्रोमीटर इज यूज फॉर वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स. B. स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच को हम यूज करते हैं टू मेजर टाइम. टी. टेप मेजर. टेप मेजर इज द राइट आंसर. आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा इन दैट वीडियो उन्होंने पूछा था कि एक फुटबॉल की सरकमफ्रेंस हम कैसे निकालेंगे. दिस इज द सरकमफ्रेंस. ये हम कैसे निकालेंगे. दे हैड गिवन अस 4 ऑप्शंस एंड टेप मेजर वाज वन ऑफ द ऑप्शंस एंड इट वाज द राइट वन. क्योंकि टेप मेजर को हम क्या कर सकते हैं, इसको बेंड कर सकते हैं. अगर आप कभी किसी दर्जी के पास गए हो और आपने उससे अपना नाप लेना हो या मेजरमेंट्स लेनी हो तो दे टेक आउट अ टेप मेजर एंड आपको मेजर करते हैं. या सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Which row describes acceleration, displacement, distance and speed? अच्छा जी, हमें बताना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है. एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि acceleration is a vector quantity. It is vector. Vector. Displacement is vector. Distance is scalar. And speed is scalar. ठीक है ना? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और क्या होती है, डायरेक्शन. डायरेक्शन. While on the other hand, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं. एक्सेलरेशन इज वेक्टर. वेक्टर. ठीक है ना? इट्स आइदर सी और डी. डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है तो डी इज द राइट आंसर. डिस्टेंस स्केलर, स्पीड स्केलर.
अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द साइज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस शोन? अच्छा जी, रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? एक मेथड हम यूज कर लेते हैं, इट इज नोन एज द पैरेललोग्राम मेथड, बट इन दिस केस इट इज नॉट रियली अ पैरेललोग्राम क्योंकि 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, इट इज मोर ऑफ अ रेक्टेंगल, लेकिन हम फिर भी इसको पैरेललोग्राम मेथड ही कहेंगे। पैरेललोग्राम मेथड स्टेट्स कि आपने इन दोनों लाइंस के पैरेलल दो लाइनें और बना देनी है, ठीक है ना? इसको हम 3 कह देते हैं, 3 न्यूटन, इसको हम 4 न्यूटन कह देते हैं, ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, आपने एक यहां से लाइन एक्सटेंड करनी है एंड टेक इट टू द अदर कॉर्नर एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ये हम कैसे निकालेंगे? यू कैन सी ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के लिए दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर सकते हैं, हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं एंड दैट विल गिव अस द व्हाट, द आंसर, इट इज सी। फिर भी हम लगा लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 5 स्क्वायर, ठीक है ना? अगर आपने वर्किंग करनी हो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, दिस इज अ बिट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ नया सिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। Question number 4. The curved line on the distance time graph shows the motion of a toy car. The straight line is the tangent to the curve at 10 seconds. So basically यहाँ हमारे पास एक distance time graph है और उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 10 seconds पे इस curve के ऊपर एक tangent form हो रहा है। आगे देखते हैं। What is the speed of the toy car at 10 seconds? So basically हमने speed निकाल ली है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कौन सी वैल्यू हमें स्पीड देती है? इट इज द ग्रेडियंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू द स्पीड। लेकिन हमने ग्रेडियंट कैसे निकालना है? हमने इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है या हमने इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है? वन फैक्ट दैट यू नीड टू नो इज, जब भी आपको उन्होंने एक कर्व दिया हो और उसका आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ जाए तो आपने उसके ऊपर सबसे पहले टेंजेंट बनाना है और टेंजेंट के ऊपर से कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं और उससे आपने ग्रेडियंट निकालना है, उसके अलावा आपने ग्रेडियंट नहीं निकालना। सो यही दो पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी वैसे ले सकते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ग्रेडियंट कांस्टेंट है। सो या ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग, ये और ये, ठीक है? पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0,3। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 10,6, 10,6। तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1, this will give us the value for a gradient, ठीक है? इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, y2 which is 6 minus y1 which is 3 divided by 10 minus 0. This will give us 10 divided by, I mean 3 divided by 10 meters per second, which is basically 0.3. So 0.3 हमारा आंसर है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई होप आपने इससे कुछ चीजें सीखी होंगी। Question number 5. The diagram shows four balances W, X, Y, and Z. The scales of all the balances are calibrated on the earth to measure mass. Which balances also measure mass correctly when used on the moon? Firstly, there is a big difference between the earth and the moon. और वो किस चीज का डिफरेंस है? वो डिफरेंस है between the gravitational field strength. Gravitational field strength of the earth is much larger than the moon, ठीक है ना? तो ये आपने दिमाग में रखना है। Secondly, उन्होंने लिखा हुआ है the scales of all the balances are calibrated. Calibrated actually सिर्फ ये दो balances हो सकते हैं, Y और Z cannot be calibrated, ठीक है ना? So ये दो चीजें दिमाग में रखते हुए आप कौन सा पेयर सिलेक्ट करोगे? मैं तो करूंगा Y एंड Z। Why? बिकॉज इनमें कंपैरिजन यूज हो रही है, जैसे आप यहां देख सकते हैं एक छोटा मैस यहां लगा हुआ है, एक बड़ा मैस यहां लगा हुआ है। रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दे विल स्टिल एक्ट द सेम। बड़ा मैस वाला इधर जाएगा, छोटे मैस वाला ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ टॉप एंड बैलेंस में भी कोई कैलिब्रेशन नहीं हो सकती। जहां बड़ा मैस होएगा वो वाली साइड नीचे जाएगी, छोटा मैस जहां होगा वो वाली साइड ऊपर जाएगी।
बिकॉज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का इफेक्ट जो है इट कैंसल्स आउट. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्प्रिंग बैलेंस पे देख ले, स्प्रिंग बैलेंस किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है? इट इज इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. अगर हम इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे ऑफ द मास, or you can say the surrounding, so what will happen is that it will be stretched more. इनके बीच में टेंशन बिल्ड हो रही है. ठीक है ना? सेम गोज विद द टॉप पैन बैलेंस. अगर आपने यहाँ टॉप पैन बैलेंस के ऊपर एक चीज रखी है, उसका मास 30 किलोग्राम्स है. सबसे पहले आप इसको अर्थ पे रखते हो, तो इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी दैट विड बी 30. या नो 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 नो, इट वुड बी 300. लेकिन अगर आप उसको मून पे रखोगे, द वैल्यू विल बी मच लेस. वाई? बिकॉज देर इज अ चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है? सो या द आंसर इज y एंड z, क्योंकि y और z दे यूज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन. रिलेटिविटी का मेथड वो यूज करते हैं रादर देन बीइंग कैलिब्रेटेड ओनली फॉर द यूज ऑन अर्थ. ठीक है? y एंड z इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं जी. A similar question. 6. A spacecraft carries a probe to Mars where the gravitational field strength is 3.7 newtons per kilogram. The weight of the probe on Mars is 370 newtons. The gravitational field strength on Earth is 9.8 newtons per kilogram. What are the mass and the weight of the probe on Earth? Firstly, mass cannot change. It can never change no matter where it goes. ठीक है ना? Mass is not a value that can change, but weight can change. Weight can change. Mass can not. ठीक है ना? इसको दिमाग में रखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है. W is equals to mg. इसमें W वेट है, m मास है, g ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है. मास हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, वेट चेंज होता रहेगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट. फर्स्टली हमारे पास आ जाता है मास. हमने मास निकालना है सबसे पहले. मास निकालने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और हमें वेट का पता होना चाहिए. वेट 370 है, एम हम यहाँ लिख देते हैं, और ये 3.7 एज इट इज. तो यहाँ 3.7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. 370 डिवाइडेड बाय 3.7, दैट विल बी 100. 100 kilograms will be the mass. So it's either A or B. ठीक है ना? Now that I have mentioned that the mass stays the same, हम इस mass को यूज कर सकते हैं in this equation. ठीक है ना? अब हम फिर से equation यूज करेंगे W is equals to mg वाली. W अब हमने निकालना है, वेट अब हमने निकालना है ना? mass मैंने आपको क्या बोला था? It will stay constant. 100 kilograms is the mass. The gravitational field strength changes according to the body it is on, या planet you can say. तो यहाँ 9.8 आ जाएगा. Therefore, 980 is the answer and B is the right answer. अच्छा जी, इसको जरा रिमूव कर देते हैं. It's too much, गंद. आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं. Question number 7. A student determines the density of a liquid. Which equipment does the student use? Firstly, density निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अब हमने किसी तरीके से ये दो वैल्यूज निकाल ली ना, तो डेंसिटी हमारे पास आसानी से आ जाएगी बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. मास हम कैसे निकालते हैं? पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मास किस इक्विपमेंट से मेजर होती है. ठीक है ना? ए, बैलेंस से मेजर होती है, बैलेंस से मेजर होती है. तो सी और डी में हमें ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं नजर आ रही जिससे हम मास मेजर कर सकते हैं. तो यहां हम लिख देते हैं बैलेंस. और वॉल्यूम किस चीज से हम मेजर कर सकते हैं? रूलर? आई डोंट थिंक सो. ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था. अगर आपने इन दोनों पेपर्स को एक साथ पढ़ेंगे ना, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे विल सॉलिडिफाई. अच्छा जी, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी ड्यू टू द मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर से हम आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ठीक है ना? आगे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 8. न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब्स पेयर ऑफ फोर्सेस.
Which row shows whether the two forces are of the same type and whether they act on the same object. So firstly, for you to understand the question, आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के थर्ड लॉ ने स्टेट क्या किया है. Newton's third law states for every action there must be an equal and opposite reaction. So let's assume this is you and this is the wall. और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि आपको फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही. एंड दिस इज ऑफ कोर्स बिफोर मीटिंग मी. तो आप इस वॉल पे एक मुक्का मारते हो. तो ऑफ कोर्स आप इस वॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो. न्यूटन का थर्ड लॉ ये स्टेट करता है कि ऑफ कोर्स जब आप एक वॉल पे फोर्स अप्लाई करोगी वो वॉल आप पे भी एक फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है ना. तो होपफुली यू गॉट दैट. अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे. द टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन पेयर. दिस विल दिस विल बी द सेम. ठीक है ना. Equal and opposite reaction. The objects on which they act, that will be different. This is you and this is the wall. Therefore, C is the right answer. Acha ji, let's move on to the next question. Question number 9. The stopping distance of a car is the sum of the thinking distance and the braking distance. Which factors affect the braking distance? Firstly, braking distance hota kya hai? It is a distance a vehicle travels from the point it starts to apply the brake all the way until the car stops. Let's say आपके पास एक path है. ठीक है ना. इस पे गाड़ी जा रही है एंड दिस इज योर कार. इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी ने ब्रेक सप्लाई करना शुरू की है एंड इस पॉइंट पे आके आपकी गाड़ी रुक गई है. आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगी? इट विल ऑफ कोर्स बी फ्रॉम द पॉइंट इट स्टार्ट्स टू अप्लाई द ब्रेक until the point it stops. ठीक है ना. दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस. अब हमने ये देखना है कि स्पीड ऑफ द कार की क्या रिलेशनशिप है विद द ब्रेकिंग डिस्टेंस, टायर्डनेस ऑफ द ड्राइवर एंड कंडीशन ऑफ द रोड. फर्स्टली स्टार्टिंग ऑफ विद द स्पीड. मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स से आप एक गाड़ी पे जा रहे हो एंड दैट कार इज 10 किलोमीटर एन आवर एंड यू स्टार्ट टू अप्लाई द ब्रेक. ऑफ कोर्स आप बहुत जल्दी रुक जाओगे. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप 100 किलोमीटर एन आवर पे जा रहे हो एंड यू स्टार्ट टू अप्लाई द ब्रेक, ऑफ कोर्स आपको ज्यादा टाइम लगेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू स्टॉप. तो या इट डज इफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस. ठीक है. सो इट्स आइदर ए बी और सी. टायर्डनेस ऑफ द driver. So tiredness of the driver does not have anything to do with the braking distance, because braking distance is the point where you start to apply the brake. It is not the thinking distance we're taking into account. They are talking about thinking distance. Tiredness of the driver affects the thinking distance, not the braking distance. Condition of the road. Condition of the road. Of course, आपकी जो road है, it can be wet. और जब wet होती है road, उसके अंदर friction कम होती है and it will take you longer for you to stop the car. आप अक्सर जाते होंगे गाड़ी पे when it has rained. आपकी मामा बोलती होंगी कि गाड़ी आहिस्ता चलाना क्योंकि गाड़ी के बीच में और सड़क के बीच में फ्रिक्शन कम होती है ड्यू टू द lubrication or you can say the water. Therefore, B is the right answer. Hopefully, you got that. Acha ji. Moving on. Question number 10. A load extension graph for a spring is shown. Which point is the limit of proportionality for the spring and what is the spring constant of the spring equal to? The limit of proportionality is from the way it starts all the way until it starts to form a curve. जब तक कि एक कर्व नहीं फॉर्म करेगा तब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं स्टार्ट होएगी. ठीक है ना. यहाँ फॉर एग्जांपल अगर एक्सटेंशन आ जाता है और इधर लोड आ जाता है तो द कर्व वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. रिगार्डलेस ये एक कर्व होता है और जो कर्व की स्टार्टिंग होती है दैट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है. सो देयरफॉर इट्स आइदर ए और बी and spring constant is equal to the gradient of PQ, not QR. QR तो of course deformed spring हो जाएगा ना. It will be deformed. Therefore वो अपनी properties lose कर चुका होगा. While on the other hand, P से Q तक वो अपनी properties maintain रखता है because it is a straight line. And the reason it is called a limit of proportionality because all the way until now, all the way up till here, क्या होता है? It is proportional to each other. अगर extension ज़्यादा हो रही है तो load ज़्यादा हो रहा है, load ज़्यादा हो रही है तो extension ज़्यादा हो रही है. ठीक है ना? Therefore, A is the right answer. Moving on. Question number 11. A uniform beam is pivoted at its midpoint.
An object weighing 40 newtons is placed on the beam 20 centimeters to the left of the pivot as shown. Which force and position balances the system? So basically वो हमसे ये पूछ रहे हैं, how do we bring the system into equilibrium? इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम लाने के लिए दो तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं. पहला ये कि हमारे पास जीरो रिजल्टेंट फोर्स हो, और दूसरा ये कि हमारे पास जीरो रिजल्टेंट मोमेंट हो. फॉर दिस सिचुएशन हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट राइट नाउ. ठीक है ना? और इसके बारे में हमने एक और चीज पढ़ी है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट must be equal to the sum of anti-clockwise moment. In this scenario, ये जो object है, it is producing an anti-clockwise moment. So for us to produce a clockwise moment, हमें इस जगह पे एक object रखना पड़ेगा. ठीक है ना? तो अब हम ऑप्शन सर्वे कर लेते हैं. A. 20 newtons acting downwards 40 centimeters to the right of the pivot. तो उन्होंने कहा है पिवट से राइट साइड पे 40 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर्स, और 20 न्यूटन्स ऑफ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो अब हम इधर का मोमेंट निकाल लेते हैं और इधर का मोमेंट निकाल लेते हैं. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 40, और क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 40. So this is actually 0. So A is the right answer. अगर आपको कोई और ऑप्शन को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, बट दे आर रॉन्ग. ठीक है, आगे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 12. A worker pulls a rope with a force P through a distance D in the direction of the force as shown. This causes a block of weight W to move vertically upwards through a height of H. How much work is done by the worker? Work is done by the worker. हमने ये बताना है कि वर्कर कितना वर्क डन करता है. तो कुछ बच्चे ऐसा जो डायग्राम है उसको देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट हाइट्स, डिस्टेंसेस एंड फोर्सेस गिवन. लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत आसान किया हुआ है बाय टेलिंग अस कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द वर्कर. तो हमने वर्कर के लिहाज से देखना है, हमने वेट के लिहाज से नहीं देखना, हमने हाइट के लिहाज से नहीं देखना, हमने वर्कर के लिहाज से देखना है. तो पहली बात, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. पहली बात, फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ द वर्कर इज पी, and distance क्या होगा? Distance will be the distance in the direction of the force, which is d. Therefore B is the right answer, which is P into D, because हमारा force जो है it is P और हमारा distance जो है it is D. Very easy question. इसको घबराना नहीं है, ना ही आपने कोई भी क्वेश्चन देख के घबराना है, क्योंकि जब आप घबराते हो आपका माइंड ब्लैंक चला जाता है. एंड इट इज ओनली वन क्वेश्चन. अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर भी देते हो तो देर आर अदर 39 क्वेश्चन जिनको आप करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो. सो या, इसको ज्यादा आपने दिल पे नहीं लेना. क्वेश्चन नंबर 13. A battery is connected in a circuit to light a lamp. What is the energy stored in a battery? The energy stored in a battery will always be chemical as per your syllabus. Very easy question. आगे चलते हैं जी. Question number 14. What is a property of both liquids and gases? A. They always fill their containers. This is wrong. Why? मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूं. Let's say आपके पास एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है. ठीक है ना? Let's name this container B. Let's say कंटेनर A के अंदर this amount of liquid है. अगर आप कंटेनर A के लिक्विड को कंटेनर B में डालोगे तो it will at most fill out till here. Therefore, they will not always fill their containers. It is right for gases, but not for liquids. ठीक है ना? आगे चलते हैं. B. They are incompressible. This is wrong.
Why? Because liquids are not compressible, but gases are. Gases can be compressed, ठीक है ना? They can flow. This is right, ठीक है ना? आखिरी भी देख लेते हैं. They have particles in fixed position. This is only right for solids, ठीक है ना? So let's move on. Question number 15. In an experiment, the volume of a gas in a cylinder is measured as the pressure of the gas is increased. The values obtained are shown. तो हमारे पास चार values हैं. What is a possible explanation for these results? So for the pressure, you can see each time it is increasing by 100,000. अच्छा जी, options पढ़ लेते हैं. After the pressure is doubled, gas starts leaking into the cylinder. B. After the pressure is doubled, gas starts leaking out of the cylinder. C. The temperature of the gas is constant. D. The temperature of the gas is increasing. Looking at the options, हमें पता चलता है after the pressure has been doubled, कुछ हो रहा है. तो हम इनकी values compare करके देख लेते हैं using the formula P1 V1 is equals to P2 V2. P1 हमारे पास है 1 into 10 raised to the power of 5 multiplied by V1, which is 20 into 10 raised to the power of minus 5, is equals to P2, which is 2 into 10 raised to the power of 5, multiplied by 10 into 10 raised to the power of 5. इससे हमें पता चलता है कि it is equal. 20 is equals to 20. लेकिन जब हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, we would not get the same results. आप ये खुद भी कर सकते हैं. तो मैं 20 को इक्वल रख दूंगा to P2 and V2. In this case, this is P1 and this is V1 and this is P2 and this is V2. ठीक है ना? According to the analysis, they should be equal. ठीक है? Proportionate. अच्छा जी. 20 is equals to P2, which is 3 into 10 raised to the power of 5 multiplied by V2. The gas is changing, therefore हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं in order to get the right answer. So 20 divided by 3 into 10 raised to the power of 5 will give us a value of 6.6 into 10 raised to the power of minus 5. Therefore, the value for the third value is incorrect. अब fourth के साथ हम फिर से same चीज करेंगे. So 20 is equals to 4 into 10 raised to the power of 5 multiplied by V2. In this case, this is P1, this is V1 and this is P2, this is V2. ठीक है ना? 20 divided by 4 into 10 raised to the power of 5 will give us a value of 5 into 10 raised to the power of minus 5. Therefore, the fourth value is incorrect as well. ठीक है ना? तो अब हमें एक पैटर्न नजर आना शुरू हो गया. आगे देखते हैं. अब हम ऑप्शंस को देखते हैं. अब हमें सही फायदा होगा. A. After the pressure is doubled, gas starts leaking into the cylinder. अगर गैस स्टार्ट्स लीकिंग इनटू द सिलेंडर, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स से आपके पास एक बलून है और आप उस बलून के अंदर हवा भर रहे हो, तो उस बलून की वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज. और यहां में नजर आ रहा है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. बी. आफ्टर द प्रेशर इज डबल्ड, गैस स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर. दिस कुड बी द राइट आंसर. इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं. सी. The temperature of the gas is constant. B. The temperature of the gas is increasing. Both of these don't really have any point to them. Therefore, B is the right answer. ठीक है ना? The pressure is increasing. Therefore, the volume should be decreasing proportionately according to the Boyle's law. आगे चलते हैं जी. अच्छा जी, थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ गया. Question number 16. The diagrams show examples of thermal expansion. P. Expansion of fluid in a thermometer. Q. Expansion of a tight lid on a glass container. R. Expansion of the long metal beam supporting a roof.
In which diagrams is the thermal expansion useful? पहले हम देख लेते हैं पी को। पी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप बीमार होते हो तो आपको अपना क्या चेक करना होता है, टेम्परेचर चेक करना होता है, एंड द टेम्परेचर इज चेक बाय द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। जब आप लिक्विड को एक हॉट चीज में डालते हो, ठीक है ना, या आप कह लो एक हॉट सरफेस पे लगाते हो, सो द लिक्विड एक्सपैंड्स, therefore you can see it expanding, you can see it rising, therefore it is very useful for cooking and you can say for बीमारियां। Q, expansion of a tight lid on a glass container। अगर आप इस lid को heat up करोगे, what will happen is that the lid will expand, और जब lid expand होएगी it will be easier for you to pull the lid। आपने देखा होगा ये छोटे मोटे मोटे जो DIY जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं या वीडियोस होती हैं, उनमें दिखाया जाता है अगर आप गर्म पानी के नीचे इस लिड को रख दोगे या एक ग्लास कंटेनर जो आपसे नहीं खुल रहा, इट विल इजीली ओपन। Therefore, P and Q are the right answer। A और B में से सिर्फ कोई आंसर हो सकता है। R, expansion of the long metal beams supporting a roof। This could be dangerous क्योंकि आपका जो बिल्डर होता है वो इसको दिमाग में रख के करता है कि एक्सपेंशन होनी है। दिस इज नॉट यूजफुल, दिस इज एक्चुअली टेकिंग यू डाउन, इट इज पुलिंग यू डाउन, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा फॉर यू टू इंश्योर अ सेफ बिल्ड। अगर आपने सेफली अपने घर को बिल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे फॉर यू टू नॉट हैव अ कोलैप्सिंग हाउस। और अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में चला जाता है तो खुदा ना खास्ता आपका घर कोलैप्स भी कर सकता है। Therefore, P and Q are the right answer. B is the right। अच्छा जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 17। Which statement about copper explains why it is a better thermal conductor than glass? Glass जो होता है it is most of a insulator. It is a insulator. It is not a conductor। ठीक है ना, आपने देखा होगा कॉपर या मेटल कह लो, मोस्टली मेटल की सॉस पैन्स होते हैं या फ्राइंग पैन्स होते हैं जिनमें हम कुक करते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। अब इसकी रीजनिंग हम देख लेते हैं। A, atomic vibration is passed on to the neighboring copper's atom slowly. This doesn't happen in metals. B, atoms move through the copper and pass on kinetic energy. No, this doesn't make anything special. ठीक है ना? C, there are density changes within copper. D, there are free electrons in the copper। This is the right answer। जो मेटल्स होते हैं दे आर सच गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव अराउंड इन द मेटल एंड pass around the kinetic energy, therefore passing around the heat more efficiently। अच्छा जी, moving on to the next question। Question number 18। Which statement describes the transfer of thermal energy in a liquid by convection? फॉर दिस मैंने यहां आपको एक डायग्राम दी हुई है, बट बिफोर कमिंग टू द डायग्राम मैं आपको दो पॉइंट्स बताऊंगा अबाउट कन्वेक्शन। कोल्ड वाटर इज डेंसर देन हॉट वाटर, देयरफॉर इट सिंक्स, एंड हॉट वाटर इज लेस डेंस कंपेयर्ड टू कोल्ड वाटर, देयरफॉर इट राइजेस। इसकी रीजनिंग मैं आपको बताता हूं। फर्स्टली आपको यह पता ही होगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, अगर आप सॉलिड या लिक्विड को हीट अप करोगे इट विल एक्सपैंड, ठीक है ना। थर्मल expansion, expansion, when it expands the volume increases, of course। When the volume increases the density will decrease since they are inversely proportional, and when the density decreases the hot water will rise। So yeah, that's the science behind it। यहाँ आप देख सकते हैं that the cold water is sinking because it is more dense and the hot water is rising because it is less dense। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन A decrease in its density causes the heated liquid to rise। This seems like the right answer। B,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? सी, इंफ्रारेड रेडिएशन passes, नो। डी, अच्छा बस छोड़ ही देते हैं। दैट्स अबाउट इट, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। या क्वेश्चन नंबर 19, which characteristics describe the image formed by a vertical plane mirror? वर्टिकल प्लेन मिरर से कौन सी इमेज फॉर्म होती है? इट इज वर्चुअल, वर्चुअल। देयरफॉर ए एंड सी आर इनकरेक्ट। अब देख लेते हैं बी और डी में से कौन सी राइट ऑप्शन है। डी स्टेट्स virtual and smaller than the object. This is also incorrect. Therefore, B is the right answer. Very easy question. Question number 20. A ray of light passes into a block of transparent material as shown. What is the refractive index of the transparent material? Firstly, refractive index का formula क्या होता है? It is n, which is the refractive index, is equals to sine I divided by sine R. I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. अगर आपको इतने अच्छे तरीके से ये चैप्टर नहीं आता तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह 35 ले लोगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह 60 ले लोगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमने इन एक्चुअलिटी क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल विच विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमने नॉर्मल ले लिया। नाउ वी हैव टू फिगर आउट व्हाट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। Angle of incidence will always be between the line of incidence, or you can say the ray of incidence, and the normal. So basically this. And the angle of refraction would be the same between the normal and the ray of refraction. अब हमने ये दोनों angles calculate करने हैं. As we can see, this is 90. So 90 minus 35 will give us this angle, which is 55. And 90 minus 60 will give us 30. Therefore, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। 55 ये है और 30 ये है। ठीक है ना? All we have to do is put them in the equation. Sin I की जगह 55, sin R की जगह 30। अब आप कैलकुलेट कर लें। अपने कैलकुलेटर्स पे आप भी कैलकुलेट कर लें, मैं भी अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूं। अच्छा, so the answer comes out to be C, 1.64। ठीक है ना? आगे चलते हैं जी। Question number 21. The diagram show light incident on the straight edge of a semicircular glass block after passing through it. Which diagram shows refraction and an angle I equal to the critical angle of the glass? अच्छा जी, सबसे पहले हम A देख लेते हैं। A में कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही because the ray is passing right through. अब हम देख लेते हैं D. D में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, therefore it is not valid either. अब हम आ जाते हैं बी पे। बी में क्रिटिकल एंगल नहीं फॉर्म हो रहा बिकॉज क्रिटिकल एंगल इज फॉर्म समथिंग लाइक दिस। सो सी इज द राइट आंसर। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस when the angle of refraction, which is this, is equals to 90 degrees. Angle of refraction is equals to 90 degrees. That is only when angle of critical is equals to angle of incidence. ठीक है ना? समझ आ गई? अगर आपने और समझना है तो stay tuned. जब भी आप एक denser medium से एक rarer medium में जाओगे, the ray of refraction will bend away from the normal as you can see. और जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा हो जाता है that the refracted angle is 90 degrees, that is when you reach the critical angle. So yeah, that is it for question number 21. Let's move on to the next question. Question number 22. Which radioactive isotope can be used for measuring cracks or flaws in metal components? A. Americium 241, an alpha emitter with a half-life of 432 years. B. Cobalt 60, a gamma emitter with a half-life of 5 years. C. Radium 223, an alpha emitter with a half-life of 11 days. D. Barium 137, a gamma emitter with a half-life of 3 minutes. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम सारे अल्फा एमिटर्स को निकाल देंगे. Why? Because alpha particles they cannot even pass a piece of paper, or you can say they cannot even pass 5 centimeters of air. Therefore, they cannot be used for measuring cracks. अब हमारे पास सिर्फ रह गया बी और डी. अब बी और डी में सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आता है? 5 years का और 3 minutes का. द हाफ लाइफ, ठीक है ना? हाफ लाइफ ऑफ 5 years sounds way more convincing than 3 minutes because for commercial use 5 years ज्यादा देर चलेगा rather than 3 minutes बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. Therefore, B is the right answer. Moving on to question number 23. Ultrasound is a type of sound wave that is not audible to a healthy human ear. Which range of frequencies contains only ultrasounds? ठीक है ना? तो बेसिकली जो हेल्दी ह्यूमन ईयर होता है, इट कैन हियर एनीवेयर अप टू 20 हर्ट्ज ऑल द वे अप टू 20,000 हर्ट्ज. ठीक है ना? तो अब हमने देखना है कि कौन सी रेंज इससे बाहर है. ए 30 to 3K hertz. It comes between 20 to 20,000 hertz. So it cannot be the answer. B 300 hertz to 30,000 hertz. Still, it comes between 20 to 20,000 hertz. Although it is not all the way in between 20 to 20,000 hertz, लेकिन part of it मतलब 300 hertz से लेके 20,000 hertz तक तो हमें सुनाई देगा. Therefore, it is not ultrasound. C 3K to 3 million hertz. It is still not the answer because 3K hertz से लेके 20,000 hertz तक फिर भी हमें नजर आएगा, I mean सुनाई देगा. ठीक है ना? Therefore, we're only left with D, which is 30,000 to 30 million hertz, which goes absolutely beyond 20 to 20,000 hertz. Therefore, this is the right answer. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी. Question number 24. What proves that a metal bar is a permanent magnet? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि repulsion between two magnets is the true test to check whether it's a permanent magnet or not. Options देख लेते हैं. A. It attracts both ends of a compass needle. Attraction is not a test. B. It attracts one end of another magnet. Again, attraction is not a test. C. It conducts electricity. Totally irrelevant. D. It repels one end of another magnet. ठीक है ना? This is the right answer. आगे चलते हैं जी. Question number 25. The diagram shows a bar magnet and four labeled arrows. Which arrow shows the direction of the magnetic field at the point where the arrow is shown? तो इसके अराउंड अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बनानी हो, वुड इट बी हार्ड और इजी? इट वुड बी वेरी इजी. ठीक है ना? तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है ना? इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना? नॉट टोटली परफेक्ट बट इट डज द जॉब. द पॉइंट इज इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है ना? It is always going to be going from north to south and something like this, and then something like this, and then something like this, and same thing here. अब आप मुझे बताएं कौन सा एरो आपको सही लग रहा है. ए तो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इधर और ए जा रहा है दूसरी तरफ को. तो ए इज रॉन्ग. बी इज ऑल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इधर, बी जा रहा है इधर. देयरफॉर बी इज ऑल्सो रॉन्ग. सी में आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. देयरफॉर सी इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड we're only left with D, और D में आप देख सकते हैं it is complying with the magnetic field lines. So D is the right answer. Let's make it a bit more visible. D is the right answer. I'm not totally sure if you can see that.
but I think it does the job. Question number 26. A shoe becomes positively charged by friction when it rubs against a carpet. Let's say ये carpet है और ये आपका shoe है. ठीक है ना, ये shoe है. Shoe became positively charged. When shoe becomes positively charged, that means that the carpet must become negatively charged. ठीक है ना? The carpet is now negatively charged. What happens as the shoe becomes charged? A, B, C, and D. C or D तो totally wrong है because electrons carry a negative charge, not a positive charge. अच्छा जी, A में हमें नजर आ रहा है negative electrons are transferred to the carpet. They are telling us that the shoe becomes positive, therefore it means that the carpet must become negative. ठीक है ना? अगर आपसे कह दें ये ऑब्जेक्ट A है एंड ये ऑब्जेक्ट B है, दे आर टोटली अनचार्ज, और वो हमसे बोल दें ऑब्जेक्ट ए हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो आप टोटली और इंस्टेंटली असूम कर सकते हो दैट द ऑब्जेक्ट बी इज नेगेटिवली चार्ज्ड. इफ ऑब्जेक्ट ए इज पॉजिटिवली चार्ज, then object B is negatively charged. So yeah, negative electrons are transferred to the carpet. So yeah, negative electrons are transferred to the shoe. If electrons are transferred to the shoe, wouldn't shoe become negatively charged rather than positively charged? Think about it. आगे चलते हैं. Question number 27. A metal conductor is connected between the positive and negative terminals of a battery. Which row gives the direction of movement of the particles that flow in the conductor and their name? First of all, protons don't flow. Therefore, A and C are taken out of the equation. Electrons do. ठीक है ना? तो electrons के लिए हमारे पास space है. And they move from the negative terminal to the positive terminal because they are electrons. Electrons always move from the negative to the positive terminal. So yeah, therefore D is the right answer. आगे चलते हैं जी. Question number 28. Three identical cells are connected in parallel to a resistor. What is the advantage of using three cells in parallel rather than using a single cell? So basically ये जो examiner है ना, वो बहुत ज्यादा similarities ला रहा है questions में, क्योंकि पिछले पेपर के जो questions थे they are very similar to this paper's question. तो अगर आपके पास टाइम निकलता है तो आप पिछला पेपर भी, इससे पिछला जो है विच इज वेरिएंट 1-1, उसको भी जाके देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे सॉलिडिफाई. अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं. Advantage of using a parallel circuit rather than a series circuit is that the cells last longer. अगर आप पैरेलल में 1.5, 1.5 एंड 1.5 के तीन सेल्स लगा दोगे, the total EMF will still be 1.5 volts, but it will last way longer. Another advantage is if one of the paths are damaged, the other ones will still work. क्योंकि आप अपने घर को ही ले लें, अगर आपके घर का एक जो है टर्मिनल खराब हो गया है, other ones are still working, right? So yeah, we use parallel circuits in your house because they have a lot of advantages. अब देख लेते हैं. Each cell produces more energy. B. Each cell supplies more charge. C. Each cells take longer to discharge. This is right. जैसे मैंने अभी आपको बताया. D. The EMF is greater than that of a single cell. ये भी मैंने आपको बताया. It will always stay the same in a parallel circuit. Although in a series circuit, अगर तीन cells connected हो side by side, they will add up. जैसे ये 1.5 है, ये 1.5 है और ये 1.5 है. All 1.5 volts, so they will add up to become 4.5 volts. But not in parallel circuits. Parallel circuits में they stay constant. अच्छा जी, another very interesting question. Question number 29.
Student has three 15 ohm resistors. He connects the resistors together in different arrangements. What is the minimum resistance and what is the maximum resistance of the arrangements that the student can produce? Firstly, the minimum resistance will be produced in parallel. Parallel. Because resistance divides in parallel. ठीक है ना? And maximum resistance will be produced in series. And the resistance adds in series. ठीक है ना? Resistance adds. Now all we have to do is calculate the resistance in parallel and in series. सबसे पहले हम सीरीज में निकाल लेते हैं because it's easier. अच्छा जी, let's say आपके पास ये एक सर्किट है, ठीक है ना? All of these are 15 ohms. How do we calculate the total resistance? We just add them up. So 15 plus 15 plus 15 is 45. The 45 is the maximum resistance. So it's either B or D. ठीक है ना? अब हमने निकालनी है पैरेलल में. पैरेलल में निकालने के लिए the options are a bit complicated. Let's say ये तीनों 15 ohms के हैं and they are connected in parallel. Now we can apply a formula which is only meant for resistances in parallel. ठीक है? That formula is 1 divided by R total is equals to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3 so on and so forth. जितने मर्जी आपके पास resistors हैं आप add कर सकते हैं. So let's say 1 divided by R total is equals to 1 divided by R1 which is 15 plus 1 divided by 15 plus 1 divided by 15. This will all come up to 1 divided by R total. इस पूरे का sum है 0.2. इसको इधर ले जाते हैं. 1 divided by 0.2 क्योंकि इसको हम R total को ऊपर ले जाते हैं 0.2 को नीचे ले आते हैं. 1 divided by 0.2 will be 5 ohms and 5 ohms is the minimum resistance. Therefore, B is the right answer. Okay? Let's move on. Question number 30. The circuit diagram shows a variable resistor R connected in parallel to the lower section of a potential divider. As you can see, a variable resistor is connected in parallel to a fixed resistor. The resistance of R increases. तो हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. What happens to the two voltmeter readings V1 and V2? So basically they're asking whether the voltage across V1 increases or decreases, and same goes with V2. Is the voltage increasing or decreasing? बस हमने ये बताना है. Before calculating, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा that the voltage is directly proportional to resistance. मतलब अगर resistance increase होएगी तो voltage increase होएगी. ठीक है ना? और अगर voltage increase होएगी तो resistance like vice versa. अगर resistance decrease होएगी तो voltage भी decrease होएगी. So yeah, therefore अब हम कर लेते हैं calculations. Let's say this resistor is 100 ohms. This is also 100 ohms and this is also 100 ohms. लेकिन they have told us that the resistance of R increases, तो हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 100 ohms before increasing and 200 ohms after increasing. After increasing. अब हमने क्या करना है? Before and after में फर्क निकालना है. The difference between before and after. तो 200 ohms before, I mean after है, 100 ohms before है. पहले हम इन दोनों के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. हाउ डू वी डू दैट? मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं. 1 डिवाइडेड बाय आर टोटल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R1, R2, R3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. बस ऐड करते रहना है जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था.
बताया था ना अभी मैंने आपको, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 divided by 100 plus 1 divided by 100. This will give us a value of 1 divided by our total is 0.02. अब r total को ऊपर ले जाते हैं, 0.02 को नीचे ले आते हैं। 1 divided by 0.02 will give us the answer, which is, I think, 50. So yeah, let's calculate. 1 divided by 0.02. It is 50. So our total, मतलब total resistance is 50 ohms. ठीक है ना? Before increasing the resistance, the total resistance was 50 ohms. अब afterwards, after का factor देख लेते हैं. After increasing the resistance, what will be our resistance? अब हमारे पास आ जाएगा, sorry, 1 divided by R total is equals to 1 divided by 200 plus 1 divided by 100. So 1 divided by 200 is 0.005 plus 0.01, which is 1 divided by 100. हमारे पास आ जाता है 0.015. तो 1 divided by R total is 0.015. इसको फिर से नीचे ले जाते हैं, 1 divided by 0.015 और आर टी को ऊपर ले जाते हैं. So 1 divided by 0.015 will give us 66.66 ohms. Therefore, we can see that in voltmeter 2, the voltage is increasing because the resistance is increasing. जब resistance increase करेगी, voltage increase करेगा. ठीक है ना? ये voltmeter 2 में है. ठीक है ना? So therefore it increases. And when resistance increases across this terminal, मतलब this arrangement, the voltage will increase as well. Therefore, less voltage is left for this arrangement. ठीक है ना? So it is decreasing. So yeah, let's move on. इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं. And yeah, I think we're good. So yeah, question number 31. The power consumption of a microwave oven is 1500 watts. So power is 1500 watts. The cost of 1 kilowatt hour of electrical energy is 24 cents. मतलब एक यूनिट है 24 cents. What is the cost of using the microwave oven for 10 minutes? इसके लिए हम एक very simple formula लगा लेंगे, which is what? इसकी cost निकालने के लिए मैंने एक formula आपको दिया हुआ है. Cost is equals to power multiplied by time multiplied by per unit cost. तो हमने कॉस्ट निकालनी है फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, सो कॉस्ट इधर आ जाती है. पावर है हमारे पास 1500 वॉट्स. तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं इन किलोवाट्स. तो 1500 divided by 1000, sorry, 1500 divided by 1000 will give us 1.5 kilowatts multiplied by time. Time को हम रखेंगे in hours. So 10 divided by 60 will give us the time in hours, which is 0. एक सेकेंड, yeah, 0.1666. ठीक है ना? Multiplied by per unit cost, which is 24 cents. 24 cents. Let's do the math. Multiplied by 1.5 and multiplied by 0.24. This will give us $0.06, which is 6 cents. So yeah, that is our answer. Question number 32. A coil of wire above a magnet is dropped. As the coil falls over the magnet, an EMF is induced across the coil.
ये तो हम सबको पता है, whenever you pass a magnet through a coil, an EMF will be produced. What does not affect the magnitude of the EMF induced across the coil? A. Changing the number of turns of wire in the coil. The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the number of turns. To the number of turns. So if you increase the turns, the magnitude will increase. If you decrease the turns, the magnitude will decrease. So this is not the right answer, or should I say the wrong answer. So yeah, B पे चलते हैं. Changing the height h from which the coil is dropped. अच्छा जी, एक और फैक्टर होता है which is the speed of the coil. If you increase the speed of the coil, the induced EMF will increase as well. ठीक है ना? And since you're dropping it from a greater height, what will happen is that जैसे जैसे वो coil नीचे गिरेगा, what will happen is that the velocity will accumulate और velocity increase होती जाएगी. Therefore, it will increase, or you can say affect the induced EMF. B. Changing the direction of the magnet so the north pole is at the bottom. That does not make any difference. Therefore, it is the right answer. आगे D भी एक दफा देख लेते हैं. Changing the strength of the magnetic field from the magnet. Again, it is directly proportional to the magnitude of the EMF, induced EMF. Acha ji, moving on to question number 33. Seems like a repeated question from the last paper. This is why I keep on emphasizing कि आप पिछला पेपर भी जाके देखो ताकि आपके concepts solidify हो. Question number 33. The results of the alpha particles scattering experiment give evidence for which of the following? It gives evidence that the nucleus is very small. ये मैं एग्जांपल हर दफा देता हूं. Let's say ये आपके पास एक फुटबॉल फील्ड है and this is a football. Now let's say this is an atom. So this will be the nucleus. इतना छोटा होता है. Nucleus is the size of a football in a football field. That's how small a nucleus is. अब मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूं. इसका डायग्राम में एक थिन गोल्ड फॉइल है एंड उसके थ्रू कौन से पार्टिकल्स पास हो रहे हैं? दे आर द अल्फा पार्टिकल्स. एंड व्हेन यू पास द अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ थिन गोल्ड फॉइल, most of the particles are undeflected, they pass right through. मतलब जैसे आ रहे थे वो वैसे ही आगे चले गए हैं. But some of the particles are deflected back. जैसे आप देख सकते हैं कुछ particles जो है they are deflected and they are hitting the frontal side of the circular whatever it is, the cone. ठीक है? So yeah, that shows only some of the particles will be deflected from the nucleus. You can nucleus बहुत छोटा होता है, most of the particles will pass right through, but some of them will collide and bounce back. 33 भी हो गया. Let's move on to 34. These are very easy questions. Question number 34. A nucleus of an isotope of cobalt is represented by the symbol 5927CO. What is the composition of this nucleus? Composition. हमारे पास नीचे है 27, which is the number of protons. So it's either A or B. And if we subtract that from the atomic mass, what will we get? We will get the number of neutrons. So yeah, these are the number of neutrons and it comes out to be 32. 32 neutrons hai and 27 protons. Very simple. A is the right answer. Let's move on to question number 35. The only stable isotope of gold, Au, has 79 protons and 118 neutrons in a nucleus of an atom. How many electrons are needed are there in a neutral atom of this isotope? अगर आपके पास 79 protons हैं, which are positive particles, they carry a positive charge.
So, in order to balance them out, in order to make it neutral, what we have to do is add 79 electrons. Therefore, the positive will cancel out the negative. ठीक है ना? So yeah, we would need 79 electrons for 79 protons. एक neutral atom होने की यही निशानी होती है that it has the same number of protons as it does the number of electrons. So yeah, moving on. Question number 36. A sample of a radioactive isotope with a very long half-life is placed next to a detector. Sheets of different materials are inserted one at a time between the radioactive sample and the detector. The background count rate is subtracted from the readings on the detector and the corrected count rates are recorded in the table. Which types of radiations are emitted by the radioactive sample? अच्छा जी, लेट्स ज़ूम। आपके पास यहाँ एक रेडियोएक्टिव सैंपल है और यहाँ आपके पास एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर, सैंपल। So examiner ये कह रहा है we're going to be placing sheets of different materials in between the sample and the detector to check which radiations pass and which radiations are stopped. ठीक है? एंड आपने बैकग्राउंड काउंट रेट को कंसिडरेशन में नहीं लेना क्योंकि वो उसने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है, तो बैकग्राउंड काउंट रेट एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना? विच टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर emitted बाय द रेडियोएक्टिव सैंपल। तो हमने ये फिगर आउट करना है कि अल्फा, बीटा और गामा में से कौन कौन सी रेडिएशंस प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन इज स्टॉप बाय लेड शीट। ठीक है ना? बीटा रेडिएशन इज स्टॉप बाय एल्यूमिनियम शीट। और जो अल्फा रेडिएशन है इट इज स्टॉप बाय 5 सेंटीमीटर्स ऑफ एयर और अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है ना? सबसे पहले हम देख लेते हैं नो शीट इंसर्टेड। जब आप उस सैंपल के बीच में और डिटेक्टर के बीच में कुछ भी नहीं रखोगे ना, द काउंट रेट विल बी 450। सो दिस इज द ओरिजिनल काउंट रेट। द एल्यूमिनियम शीट से कौन से पार्टिकल्स रुकते हैं? दे आर द बीटा पार्टिकल्स। तो हम सेफली assume कर सकते हैं that the count rate has gone down, therefore beta particles exist। क्योंकि अगर बीटा पार्टिकल्स एग्जिस्ट ना करते तो काउंट रेट नीचे ना जाता। आगे देखते हैं थिन लेड शीट। जब हमने थिन लेड शीट रखी है मजीद पार्टिकल्स रुक चुके हैं, therefore it is going down again। gamma particles, gamma rays exist, gamma radiation exists, सॉरी। ठीक है ना? अच्छा जी, जब आप एक थिन पेपर शीट रखोगे द पार्टिकल्स एक्चुअली इंक्रीज, द काउंट रेट इंक्रीज। दिस इज अ राउंडिंग एरर। आप 450 और 452 को सेम कंसिडर करोगे, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। ऊपर नीचे 5-6 काउंट रेट होता रहता है। सो देर आर नो alpha particles present, therefore our answer is beta and gamma, beta particles and gamma radiation only। आगे चलते हैं जी। दिस इज अ इंटरेस्टिंग section of the paper, radioactivity का and space physics। In a fission reactor, what particle causes the uranium 235 nucleus to split? Let's say कि आपके पास uranium 235 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपने एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करना है तो आप एक रोग न्यूट्रॉन इसकी तरफ शूट करोगे। जब आप एक रोग न्यूट्रॉन शूट करोगे टुवर्ड्स द यूरेनियम 235, इट विल स्प्लिट। ठीक है ना? एंड व्हेन इट स्प्लिट्स, इनके साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है ना? और ये जो 2 या 3 न्यूट्रॉन्स है
ये आगे जाके मजीद यूरेनियम 235 से कनेक्ट होते हैं एंड दे मेक इट अनस्टेबल। देयरफॉर ये भी दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दीज आर ऑल यूरेनियम, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, ठीक है ना। दे स्प्लिट फर्दर इनटू टू पार्टिकल्स और इनमें से भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है ना। सो या इट कीप्स ऑन गोइंग, ये एक चेन रिएक्शन बना देता है। सो या द पार्टिकल्स इज न्यूट्रॉन। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको अगले क्वेश्चन में इसे हेल्प करवा सकूं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट करते हो ना, एक सिंगल न्यूट्रॉन से, तो सिंगल न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू सिक्स न्यूट्रॉन्स, और वो जो सिक्स न्यूट्रॉन्स है वो आगे जाके और मजीद यूरेनियम्स के साथ अटैच होते हैं और उनको अनस्टेबल करते हैं और उनको स्प्लिट करवाते हैं। देयरफॉर मोर न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये चलता रहता है। तो हमें मॉडरेटर इसलिए चाहिए होता है ताकि हम इनको लिमिट कर सके, हम इनको स्टॉप कर सके, हम इनको कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। सो या to absorb all the neutrons in order to stop the chain reaction, to produce more neutrons in order to create the chain reaction, to remove thermal energy in order to control the chain reaction, to slow down neutrons in order to continue the chain reaction. This looks like the right answer. जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनानी है हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39। In which region of the electromagnetic spectrum does the sun radiate the most energy? Infrared region, ठीक है ना, वेरी इजी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40। Four of the stages in the cycle of a star until it becomes a red giant are shown. Fun fact, जो हमारा सन है, it will eventually become a red giant as well. So yeah, हम उतनी देर के लिए यहाँ नहीं होंगे, hopefully. So yeah, it's gonna be billions upon billions of years. So a fun little fact. आगे पढ़ते हैं। In which order do these stages occur, starting with the earliest? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, इट कोलैप्सेस इन इटसेल्फ। जो स्टार होता है, इट कोलैप्सेस इन इटसेल्फ। सो या एक्स इज द फर्स्ट स्टेप। आगे क्या होता है? इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम इट्स सेंटर। तो डब्ल्यू सेकंड हो जाता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इट एक्सपैंड्स एट द लास्ट स्टेज, आखिर में जाके एक्सपैंड करता है। And Z is of course the third. Most of the hydrogen has been converted into helium. Hydrogen is mainly the fuel of the star. ठीक है। तो सबसे पहले आएगा X, आखिर में आएगा Y, बीच में आएगा W and Z. Therefore, D is the right answer. That is it for your paper. इस पेपर का नाम क्या था? It was, I think, paper 1 2 2023, May June 5054, O level physics. Thank you for watching. आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस recommend कर सकते हैं। You can go check my topical past papers out, क्योंकि they are very helpful in situations like this. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो आप रेडियो एक्टिविटी के सेक्शन में जाके वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, अनलेस यू until you understand the questions। समझ आ गई? एंड अल्लाह का नाम अपने ज़बान पे रखेगा। प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रे फॉर मी, कि आपके अच्छे ग्रेड्स आए। लाइक या प्रे फॉर योर हेल्थ, एवरीथिंग लाइक दैट। नमाज पढ़ा करें, ऑल दैट स्टफ। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।